हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello my dear students and friends, welcome back. I'm going to make a new video for you, and three words I have already written here: lose, lose and loss. This is lose, this is lose, this is also lose, this is loss. Some of my students, they asked me to let them know the difference between these three words. So that's why I decided to make that video for you and for those students. First word is, that is lose. Let's talk about that. तो देखिए, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है लूज। वर्ब मतलब कोई चीज को खो देना, खो जाना। एंड पास्ट ऑफ दिस इज लॉस्ट एंड लॉस्ट। ठीक है ना? तो इसको आप you can use that word as a verb in sentences like my son loses his pencil in his school every day. ठीक है, my son loses his pencil in his school every day. तो ये वर्ब है। ठीक है, lose मतलब खोना। You can use it in any tense. Lost, I have lost my car's key. मेरी कार की चाबी खो गई है। I have lost my car's key. So this is lose means verb. Now let's talk about that word lose. This is adjective. This is adjective. इसका मतलब होता है ढीला, ढीला होना। तो कोई चीज लूज है, जैसे दिस शर्ट इज लूज टू मी। लूज या और ढीलापन और कोई शब्द ले सकते हैं या कोई और सेंटेंस ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कि वो ढीला पैंट पहने हुआ था, है ना? तो he was wearing a loose pant or trouser. Okay, next third is, that is loss. This is noun. This is noun means हानि, नुकसान। तो जैसे किसी को कोई नुकसान हो, ये नाउन है तो नाउन की तरह यूज होगा। जैसे I have, या
किसी को बिजनेस में लॉस हो गया तो he has had a big loss in his business. इस तरीके से ये 3 वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लूज वर्ब है, लॉस्ट उसका सेकंड थर्ड फॉर्म है, लूज एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ढीला, और लॉस ये नाउन है, इसका मतलब होता है हानि। तो please try to use these words in different sentences and try to make different phrases using these 3 words: verb, adjective and noun. Please like this video and share that video for others. And I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video, so you may contact me to learn English with me or to know about my English courses. Thanks for watching. Thank you.